Namaste दोस्तों, welcome to our talks about cancer in general. बहुत बार ये टॉपिक बहुत आज का इंटरेस्टिंग है क्योंकि हमको आज ये सवाल मेरे पास सामने इसलिए आया क्योंकि हाल ही एक पेशेंट ने मेरे को कहा कि डॉक्टर साहब मैं तो कुछ अल्कोहल लेती नहीं हूँ, मुझे कभी सिगरेट को हाथ नहीं लगाया, फिर भी मुझे कैंसर कैसे हुआ? So this question came to my mind कि does cancer happen only to smokers and alcoholics? I mean this is a question which is in the minds of a lot of our patients. और ऐसा लगता है कि हमने कोई गुनाह नहीं किया तो हमको क्यों चूज किया गया कैंसर होने के लिए? तो लेट्स ट्राई एंड लुक एट दिस क्वेश्चन फैक्चुअली। हालांकि ये बिल्कुल बिल्कुल सही है कि कैंसर इज मोस्ट कॉमन इन टोबैकोज स्मोकर्स एंड अल्कोहलिक्स। ये कहना गलत है कि जस्ट बिकॉज कैंसर हैपेंस टू सम पीपल हु डू नॉट स्मोक और ड्रिंक मींस दैट यू कैन हैव अ बोहेमियन लाइफस्टाइल, डू व्हाट यू वांट, स्मोक व्हाट यू वांट एंड येट you will be free of cancer. No, friends, if you take the statistics of cancer patients, 50% or more of them have a relation to tobacco alone. Add alcohol and the figure is even higher. So let's not be in this myth that cancer and tobacco are not related. It's just a figment of imagination of the pharma industry or doctors or whatever. It is definitely related. Do not play with fire. Having said that, let's come to the question of today. Does cancer happen only to smokers and alcoholics? Now what happens is that if you see what happens to the other 50%. Now, just a little background. Now, cancer is not a single disease. Cancer is actually a family of diseases. तो कैंसर जब होता है तो सिर्फ हर एक ऑर्गन की अपनी एक कैंसर की अलग कहानी होती है और इस कहानी को हम लोग जरा थोड़े से ध्यान से देखें। लेट्स टेक लंग कैंसर। नाउ लंग कैंसर जब होता है तो 80% ऑफ देम विल गिव अ हिस्ट्री ऑफ स्मोकिंग। सम ऑफ देम मे बी क्लोजेड स्मोकर्स। अगर आपने पूछा कि सिगरेट पीते हो, नहीं जी बिल्कुल नहीं पीता, तो डिग अ लिटिल डीपर एंड दे विल टेल यू हाँ कभी ले लेते हैं, कभी दिन में एक आध हो जाता है। दूसरा, it may not be that you are a smoker directly, you may be the victim of second hand smoke. जरूरी नहीं है कि आपने हाथ में सिगरेट पकड़ा हो, लेकिन आपके आसपास आजू बाजू में अगर कोई स्मोकिंग करता हो तो उस स्मोक को जब आप अंदर लेते हो तो आपको भी उतनी ही हानि होती है जितने उस स्मोकर को होती है। इसके किसको कहा जाता है? सेकेंड हैंड स्मोक। एंड यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो 6 lakh people 6 lakh people get affected by cancer just because of second-hand smoke. And these include children, these include women, these include all your bystanders. So if you are a smoker, please remember that ad which used to come in the movies that you are not killing yourself, you are killing your family members as well. So that is a burden that you will have to bear. That's a cross you have to carry if you are a smoker. So if you are not even that, none of your family smokes, then what happens? Then obviously there are some other things. Now, one of the main things is air pollution. Now remember, if you see a beam of sunlight coming, आप देखते हो कि वो छोटे छोटे particles ऐसे suspended रहते हैं हवा में. Now, these are suspended air particles. If you see the pollution boards, you will actually have a count of that कि इतना percentage suspended air particles है. Why? Why is it a big deal? It's a big deal because this is one of the bigger causes of cancer, bigger causes of respiratory diseases after smoking. So that is one cause of cancer. Other is exposure to industrial gases like radon. ये सब चीजों से भी कैंसर होता है, asbestos से कैंसर होता है. So some of the industrial pollutants do cause lung cancer. The other cancers have equally interesting stories. For example, oral cancer. हमको लगता है कि oral cancer उन्हीं को होता है जो गुटखा खाते हैं, लेकिन बहुत लोग बोलते हैं कि नहीं मैं तो गुटखा कभी खाता नहीं हूँ, खाती नहीं हूँ, मैं सिगरेट नहीं लेती हूँ, तो क्यों मुझे कैंसर हुआ? तो वन ऑफ द मेन कॉजेस इज अ शार्प टूथ। वो नुकीला दांत जो होता है, इल फिटिंग डेंचर जो होता है, जो बार बार एक ही जगह पे लगते रहता है। रिमेंबर इफ यू हैव हैड अ टंग बाइट, रिमेंबर दैट स्मॉल वुंड दैट हैपेंस. Now, if that keeps on happening day after day, month after month, that thing can become cancerous because of repeated injury. And in senior citizens, ill-fitting dentures are one of the main causes of cancer if they are not smokers or tobacco chewers. So please remember, if you do not have a well-fitting denture, do not hesitate to change the denture. बिकॉज लॉट ऑफ टाइम्स हम सोचते हैं कि यार डेंचर बदलने को जाएंगे वापस उतना खर्चा होगा बिकॉज
है भाई, डेंटिस्ट आजकल बहुत एक्सपेंसिव है, तो लेकिन अगर होता है तो फिर इट इज मच बेटर एंड डेफिनेटली मोर चीपर देन अंडरगोइंग कैंसर ट्रीटमेंट. सो डू नॉट हेजिटेट टू चेंज इल फिटिंग डेंचर. नेक्स्ट अपने को क्या होता है कि अगर समझो किसी को कोई कोई बहुत तीखा, बहुत स्पाइसी फूड खाता हो, जैसे कुछ कुछ जगह है, जैसे कर्नाटक बॉर्डर पे हम देखते हैं कि लोग मिर्ची खा लेते हैं, उनका खाना बहुत स्पाइसी होता है. ऐसे स्पाइसी फूड से भी फूड पाइप का कैंसर हो सकता है, बिकॉज अगेन इट इज इरिटेशन. रिमेंबर फ्रेंड्स, द basic cause of cancer is repeated irritation causing a lot of changes in the skin, and either the inner skin or the outer skin of the body, and those cells then start turning cancerous or malignant. So this can also cause cancer. Now let's take something like, the other causes, other cancers like breast cancer, colorectal cancer, uterine cancer. Now a lot of women don't smoke, remember, but smoking is increasing. Let's not hide that fact. You go to any IT park, bindas लोग लड़कियां smoking करते रहती हैं. They are looking for liberation. They are looking for equality. They are looking for an attitude. They are looking for something which they think is giving them a good platform in the corporate world. But hey, friends, that's the absolute wrong way to get onto an equal footing or whatever you're looking for, because smoking is an invitation to getting all the kind of wrong things, especially in a woman's body. Smoking causes way too much harm as compared to a man. And it's not me, it's science saying that. It's nothing like gender inequality here, it's just the way things are. But if it is a non-smoker, one of the main causes that we are seeing is obesity and the changing lifestyle. Now, a classic example is Japan. अभी जापान में क्या हुआ कि जब जापान प्री वॉर जापान, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले का जापान और पोस्ट वर्ल्ड वॉर के बाद का जापान, एक कंप्लीटली दो अलग देश थे. Very few people know this. Now, Japan in the pre-Meiji Revolution area. If you're fans of history, you'll remember a word called Meiji Revolution. When the Americans came to Japanese harbors, they were the first guys who unlocked the Japanese harbor, exposed them to the West. And then Japan suddenly realized that they were living in a cocoon. They wanted to grow, they wanted to become advanced, and they started adopting Western lifestyle. So before the Meiji Revolution, Japan was almost 100% vegetarian nation. Post, it became completely different. It adopted Western lifestyles, and even after the war, it became even more different as it underwent rapid industrialization. So colon cancer, which was about 20 to 30 per 1 lakh population in the pre-war era, became nearly 60 to 70 per 1 lakh in by 2000, by the year 2000. So almost a doubling of incidence of disease like cancer. So changing lifestyles, changing food habits do cause a damage in the society. So let's not look beyond that. Let's not brush that under the carpet. Obesity is one of the main causes of cancers, if apart from addictions. You name it: breast cancer, uterine cancer, colorectal cancer, cancers of the stomach and esophagus. Now, that was a very rare thing even about 25 years back. Now, what's happening? The weight is increasing. People are taking aerated sodas. People are taking sugary diets. People are having a lot of acidity. There's a lot of stress in the system. So all that causes reflux. You remember वो जो जलन होती है बहुत खाना खाने के बाद. Now repeated reflux disease damages that skin of the food pipe and can cause cancer. So these are things that are leading to cancer. So whether smoking only causes cancer? No, friends. These are things that can happen to a complete non-smoker. So let's not brush that under the carpet. So diets, obesity, and saturated fats, lack of physical activity. Now, physical activity has a negative correlation with cancer. If you are fit, if you do your exercises well, if you adopt healthy lifestyles, the less is the chance of your developing cancer.
So these are important things. Remember, a lot of times cancer is a lifestyle related disease. ये बात मैं कहने के लिए थकता नहीं हूँ, क्योंकि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इज सो वेरी इंपॉर्टेंट. लोगों को लगता है कि सिर्फ कार्डियक डिजीज लाइफस्टाइल से होता है. नहीं फ्रेंड्स, इवन कैंसर इज क्वाइट क्लोजली रिलेटेड टू लाइफस्टाइल्स. So let's not forget this fact. Let's pledge to have a very healthy lifestyle. Now, lastly, I will come to the last piece in the puzzle, that is family. Now people love to blame your family for everything. क्या करे भाई, हमें हमें इस घर में जन्म दिया है तो हमको ये सहना ही पड़ेगा. You can party till 6 a.m. in the morning. You can drink whatever you want. You can eat whatever you want. Don't do physical activity, and when you get cancer, you only ask कि हमारे दादाजी को कैंसर हुआ था इसलिए हमको कैंसर हुआ. Wrong, friends. It is a very, very minuscule part of cancer incidence that you can attribute to your family. Just about 5%. 5%, 5 to 10% patients who have cancer give a positive family history, और उसका भी उसकी भी एक फैमिली होती है. ऐसा नहीं है कि दादाजी को सिगरेट पीने की वजह से अगर लंग कैंसर हुआ था तो पोती को ब्रेस्ट कैंसर हो जाएगा. ऐसा बिल्कुल नहीं है. Basically, there are families of cancers which go together. For example, breast cancer, uterine cancer, ovarian cancer, colorectal cancer, prostate cancer. This is one family. आपने सुना होगा वो एंजेलिना जोली की कहानी. BRCA1 पॉजिटिव, उसने जेनेटिक टेस्ट की, वो जेनेटिक टेस्ट पॉजिटिव आई तो उन्होंने प्रोफिलैक्टिक सर्जरी कर दिया, उन्होंने बिफोर प्रीएम्प्टिव सर्जरी कर ली. तो these are familial cancers, very very small incidents. Nowadays there are tests. आजकल जेनेटिक काउंसलिंग होता है, जेनेटिक टेस्ट होते हैं जो हमें आइडेंटिफाई करने के लिए आसान बनाते हैं कि हु इज मोर ससेप्टेबल टू विच काइंड ऑफ कैंसर. फॉर एग्जांपल, अगर किसी को फैमिली हिस्ट्री ऑफ ब्रेस्ट कैंसर है तो उन्होंने एक BRCA1 BRCA2 नाम की टेस्ट करनी चाहिए, जो एक सिंपल ब्लड टेस्ट है, और या तो सलाइवा टेस्ट है जिसे अपना जेनेटिक एनालिसिस किया जाता है. और इस जेनेटिक एनालिसिस करने से क्या होता है कि उनको ये समझ में आता है कि अपनी रिस्क फैक्टर क्या है ये चीज डेवलप करने के लिए. तो does it prevent can you really prevent genetically developing cancer? No, you can't. It's there in your genes. But what happens is that because you are aware, you tend to स्क्रीन अर्ली. आपका ख्याल ज्यादा अच्छी तरह से रख पाते हो. अगर समझो ब्रेस्ट कैंसर की हिस्ट्री हो तो आप मैमोग्राफी जल्दी चालू करते हो. अगर ब्रेस्ट में छोटी सी भी गांठ हो गई तो फिर आप जाके डॉक्टर से टेस्ट करवाते हो. तो इससे क्या होता है कि वो कैंसर काफी अर्ली डिटेक्ट होता है, और चूंकि वो अर्ली डिटेक्ट होता है उसकी ट्रीटमेंट भी अच्छी होती है और क्योर के चांसेस भी बढ़िया होते हैं. तो इसीलिए जेनेटिक टेस्टिंग, जेनेटिक काउंसलिंग आज एक कैंसर हॉस्पिटल का, कैंसर क्लिनिक का एक बहुत अहम और ऑर्गन बन गया है, बहुत अहम अंग बन गया है. और इसके वजह से काफी सारे टेस्ट होते हैं, उनकी थेरेप्यूटिक यूज भी है. ऐसा नहीं है कि ये सारे टेस्ट जो हैं ये सिर्फ डायग्नोसिस के लिए हैं. इनमें से कुछ टेस्ट ऐसे हैं कि जिसके वजह से हम लोगों को दवाइयों की पता चलता है कि ये दवाई देने से इनको ज्यादा फायदा होगा या नहीं होगा. ये सब चीजें भी उनमें से हमें पता लगती है. सो दे हैव अ थेरेप्यूटिक इम्प्लीकेशन, दे हैव अ डायग्नोस्टिक इम्प्लीकेशन एज वेल. So friends, these are things that are not related to just smoking and tobacco. So cancer is beyond smoking, cancer is beyond tobacco. Let's not forget this fact that there are a host of other diseases, host of other reasons that can cause cancer. Obesity है खास करके. These are modifiable risk factors. Remember, apart from the 5 to 10% genetic risk, 90% of it is modifiable. Most of the cancers are modifiable risk factors. यानी अगर मैं मेरा ख्याल रखता हूँ, मेरे डाइट का ख्याल रखता हूँ, मेरे फिटनेस का ख्याल रखता हूँ, मेरे स्ट्रेस लेवल्स का ख्याल रखता हूँ, तो chances are that I have just reduced my cancer risk. So let's pledge to have two things. One, that we will have a lifestyle which is healthy in all respect, mentally, physically, both. Secondly,
वी विल ऑल्सो डू व्हाट इज कॉल्ड अ स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग क्या होता है कि अगर हम लोग कोई टेस्ट करें कि जिससे इस बीमारी के बारे में हमको जल्दी हमको इंफॉर्मेशन प्राप्त हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल इन ब्रेस्ट कैंसर वी ask for mammography. Now mammography is a test that is done that all women above the age of 50 should do annually, and all women above the age of 40 should do once in 2 years or once in 3 years. This helps to detect 90% of breast lumps. It is responsible for early detection of breast cancer and definitely can help to reduce mortality, can help to diagnose breast cancer early. दूसरा होता है पैप्समियर। पैप्समियर जो टेस्ट है जो गर्भाशय का मुख का कैंसर होता है, सर्वाइकल कैंसर, यूट्राइन सर्वाइकल कैंसर, जिससे कि सेल्स लिए जाते हैं गर्भाशय के मुख से, उसको टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है। उससे वो हमें ये जानकारी प्राप्त होती है कि इससे हम लोगों को कैंसर होने की संभावना है कि नहीं है। तीसरा, पुरुषों में पीएसए नाम की टेस्ट होती है जो एज ऑफ 50 के बाद में करनी चाहिए। हाँ, पैप्समियर किसी ने करना चाहिए तो पैप्समियर शुड बी डन बाय ऑल सेक्सुअली एक्टिव वुमेन once in 3 years at least till the age of 65। पीएसए की टेस्ट होती है जो 50 के बाद पुरुषों ने करनी चाहिए वंस इन अ ईयर फॉर डिटेक्शन ऑफ प्रोस्टेट कैंसर। अगर कोई स्मोकर है तो उन्होंने चेस्ट एक्सरे भी करना चाहिए वंस इन अ ईयर, और ओरल एग्जामिनेशन करनी चाहिए कि उसमें कोई तंबाकू के वजह से कुछ बदलाव आए हैं क्या। लास्टली आई वुड से लिसन टू योर बॉडी। योर बॉडी ऑलवेज टॉक्स टू यू, ऑलवेज ट्राइज टू टेल यू कि बाबा कुछ हो रहा है, मेरी तरफ ध्यान दो। बट हमारे इस जिंदगी में, दौड़ धूप की जिंदगी में, जहां हमको अपने प्रोजेक्ट कंप्लीशन की ज्यादा ख्याल रहता है कि हम कब हमारा सबमिशन करें, कब हमको इंक्रीमेंट मिले, कब हमको प्रमोशन मिले, उसकी हमको जल्दी रहती है, हम शरीर का सुनते नहीं है, और इसी वजह से हम ऐसी बीमारियों के शिकार बनते हैं। सटल सिम्टम्स, फॉर एग्जाम्पल अ लंप इन द ब्रेस्ट विच इज पेनलेस, बिल्कुल तकलीफ नहीं दे रहा है, लेकिन गांठ है, धीरे धीरे बढ़ रही है, तो ध्यान रखिए कि उसकी जांच करा लीजिएगा। इट्स अ नैगिंग कफ विच इज जस्ट नॉट गोइंग, आपने कफ सिरप लिया, सब लिया, लेकिन लोगों ने कहा कोविड टेस्ट करा लो, वो भी नेगेटिव है, लेकिन जा नहीं रहा है, ड्राई कफ है, रात को सोने नहीं दे रहा है, गेट इट चेक, इट कुड बी कैंसर। काफी एसिडिटी हो रही है, बार बार एसिडिटी हो रही है, उल्टियां हो रही हैं, नॉर्मल दवाई से ठीक नहीं हो रहा है, गेट इट चेक्ड। ब्लीडिंग हो रहा है, मेनोपॉज हो गया है, 10 साल के बाद सडनली ब्लीडिंग चालू हो गया है, कुड बी अ साइन ऑफ यूट्राइन कैंसर। अगर पाइल्स हो, अगर लेकिन पाइल्स की ट्रीटमेंट आपकी चल रही हो लेकिन उसमें पेन भी है, पाइल्स ठीक नहीं हो रहा है, तो रिमेंबर 1 in 5 पेशेंट्स will have rectal cancer and not just piles. सो दीज आर वेरी वेरी सटल सिम्टम्स। इसमें कोई कैंसर बड़ी बीमारी है लेकिन उसकी बड़ी निशानियां नहीं होती, बहुत छोटे छोटे कदमों से, जैसे मराठी में हम लोग चोर पाउल बोलते हैं, वे दबे पैरों से ये बीमारी हमारे शरीर में आती है। उसका ध्यान रखिए, उसके ऊपर ख्याल रखिए, अपने शरीर का ख्याल रखिए, गेट योर चेकअप्स डन, एंड डेफिनेटली इफ डिटेक्टेड अर्ली, कैंसर इज नाउ completely curable if detected early. So remember this and have a healthy lifestyle. Stay healthy, stay safe, stay fit. धन्यवाद, नमस्ते।